क्या आप जानते हैं कि भारत में ऑटोमोबाइल वायर्स बनाने वाली कंपनीज आज विश्व स्तरीय बन रही हैं? इस फैक्ट्री में ऑटोमोबाइल वायर्स बन रहे हैं। ये फैक्ट्री ऑर्गेनाइज्ड ऑटोमोबाइल वायर्स बनाने वाली फैक्ट्रीज के लिए एक उदाहरण है। उन्हें दर्पण दिखा रही है। ये वायर गाड़ियों में उपयोग किए जाते हैं। We are manufacturing automotive wires and supplying to all the automotive companies like Maruti, Ford, General Motor, Volkswagen, Mahindra, and so many other two-wheelers bike manufacturer through their wiring harness suppliers. We are one of the largest in India, having a business share of over 60%, and we are exclusively making automotive wires. Our focus is 100% automotive. भारत के ऑर्गेनाइज सेक्टर में बनने वाली इन वायर्स में बहुत परिवर्तन आए हैं। ये वायर्स ऐसे बनाए जाते हैं कि इनमें डिफेक्ट ऑनलाइन ही डिटेक्ट हो जाता है। We have a 100% mistake proofing systems so that the product which is made, it is checked online, and all the controls what we have tried to put is on the machine. So whatever the material we will make, whatever the wire we will make, either we will make it will be 100% correct or will not be making it. The machine will stop on its own. So these are the kind of systems which we have implemented online. So our focus is that whatever we have to control, we don't have to control after when we make wire. It has to be controlled during the process. पहले ऑटोमोबाइल वायर्स की थिकनेस अधिक होती थी, लेकिन अब गाड़ियों में पावर की खपत बढ़ी है और स्पेस घटा है। इसीलिए वायर्स की थिकनेस बहुत घट गई है। We have our own trial lab where we try all the new compounds, all the requirements which has to be fulfilled in that new wire, like the heat resistance value, the cold resistance value, and now we are continuously working on reducing our wire weights, which is the key. Like 10 years back, 15 years back, people used to work with the cable which are very thick, like the wall thickness of 0.6 mm, 0.7 mm. Then we reduced the wall thickness, maintaining the same specification values to 0.4, then to 0.3, and now we are working with it's a specialized wire called CIVUS wire, where the wall thickness is only 0.2 mm. आज भारत में हर स्पेसिफिकेशन में वायर्स बनाए जा रहे हैं और भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ईस्ट यूरोप की ओर रुख भी कर रही है। India is a very mixed market as per the international norms. So we have Japanese types of wires, German types of wires, American types of wire, and French types of wire, and we are maintaining as per their specification requirement. We are also planning to put up a factory in Eastern Europe. There is a country called Macedonia. इसमें कोई शक नहीं कि मेक इन इंडिया का असर धीरे धीरे ही सही, लेकिन भारत के एसएमई सेक्टर पर दिखने लगा है।